start our next chapter, that is last unit of your subject resource management. I hope you understood all the units of this subject. Now we are left with only one unit, that is functions of management. So before this unit, as you know that हम प्रैक्टिकल्स कर रहे थे जो हमने कंप्लीट किए हैं, उसमें सिर्फ लास्ट प्रैक्टिकल रह जाता है. सो इंशाल्लाह वो भी हम कंप्लीट करेंगे. Now today we start our next unit, that is functions of management. Dear students, under the functions of management, the sub topics are decision making, planning, supervising, controlling, organizing, and evaluation. As you know that the management, its functions, it involves all these factors. So these are the functions of management. ठीक है? When you are able to solve the problem, when you want to solve the problem, you need all these steps. You have to follow all these steps, then you can solve the problem. ठीक है? In the same way, when you are doing some management, or when you are performing any sort of activity, or you want to achieve any type of goal, or any you want to take any decision, so you have to follow all these steps, then only you can achieve your goal. ठीक है? So dear students, today we start one function of management, that is decision making. Dear students, you know that in every task, in every activity, decision making is इम्पॉर्टेंट. ठीक है? चाहे आप कोई भी एक्टिविटी, कोई भी आप टास्क करते हैं, या आप किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप डिसीजन मेकिंग करते हैं. ठीक है? आप डिसीजन लेते हैं. आप अपनी फैमिली को चलाने के लिए, जो हमारी फैमिली है घर पे, आप उसको चलाने के लिए हम डिसीजंस लेते हैं कि आज हमें ये करना है, हमें ये सारा गोल, आज हमारा ये टास्क है, सो इस टास्क को अचीव के लिए आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी है. ठीक है? या हमारे पेरेंट्स कुछ डिसाइड करते हैं कि हमें आज मंडे को यहाँ जाना है किसी पिकनिक स्पॉट पे, तो उस डिसीजन को लेके वो फिर कहता है कि हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करनी होती है. सो एवरी सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी, एवरी टास्क और एवरी गोल needs an decision making. So decision making is the first or integral part of the management. ठीक है? सो मैनेजमेंट जो है इसका मेन पार्ट है डिसीजन मेकिंग. ठीक है? या any sort of activity or any goal, the first initial stage or initial part is the decision making. Decision making is the integral part of modern management, because without decision you are not achieve your goal, you are not able to achieve your goal, you are not able to take any activity, or you are not able to take any step in order to achieve that goal. Because जब तक आप कुछ डिसाइड नहीं करते हैं, आपका जो सारी एक्टिविटीज है वो वेग में जाएगी. ठीक है? सो इन ऑर्डर टू मैनेज ईच एंड एवरी एक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग इज वेरी important. Quality of decision determines the quality of the management. So जो क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की, जो डिसीजन मेकर होता है वो कैसे डिसाइड, डिसीजन कैसा होगा, क्वालिटी कैसी होगी, सो वो फाइन डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. देखिए, अगर मैं आपको प्रॉब्लम देती हूँ, मैं कहती हूँ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व आप कीजिए. ठीक है? सो देयर आर टू स्टूडेंट्स जिनको मैंने ये प्रॉब्लम दे दी और मैंने इनको कहा यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो ये दो स्टूडेंट्स है, ये देखेंगे हम कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. इट मीन्स ये इसमें देखेंगे कौन कौन से सॉल्यूशंस है जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. सो ये डिसाइड करेंगे. सो एक स्टूडेंट अपने माइंड के हिसाब से, अपनी थिंकिंग के हिसाब से डिसीजन लेगी, एंड सेकंड स्टूडेंट टेक्स डिसीजन एज पर हर मेंटालिटी. सो जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन है, किस स्टूडेंट को कैसा डिसीजन की क्वालिटी होती है, वो डिटरमाइन करती है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है?
Decision making is of paramount importance as a mental process in solving problems as of acquiring and using resources to achieve goals. So डिसीजन मेकिंग जो है ये एक मेन या एक इंटीग्रल या एक हार्ट है, हम कह सकते हैं इट इज a heart of management, because without decision making you are not able to use alternate use of resources. ठीक है, ये एक मेंटल प्रोसेस है, ये एक मेंटल एक्टिविटी, इट मीन्स आपकी मेंटल इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, आप थिंकिंग करते हैं, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे आप सोचते हैं कि मैं कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करूं सो दैट आई कैन अचीव गोल. ठीक है, सो इट इज ए heart of the management. Without decision making you can't achieve your goal, you can't reach to the goal. ठीक है, so decision making is an integral part of the management. I hope you understood this. It is the heart of management and requires time to complete it. It requires knowledge of essential information, application of the knowledge in life situation, and also the willingness to know and apply. बिकॉज डिसीजन मेकिंग आप तब तक नहीं ले सकते हैं, गुड डिसीजन आप नहीं तब तक ले सकते जब तक आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होती है कि मेरे पास इतने लिमिटेड रिसोर्सेज है, ये सारी सबकी डिमांड्स है मेरे मेंबर्स की, इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज है, कितना टाइम मेरे पास है, कितना रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है. सो इन सारे स्टेप्स को वो माइंड में रखता है, देन ही टेक डिसीजन. ठीक है, सो तब जाके डिसीजन एक गुड डिसीजन बन जाता है. जब हम ऐसे ही विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और अदर थिंग्स और नीड्स एंड वांट्स ऑफ द मेंबर्स, डिसीजन जो है वो वेग में जाता है, वो आपके गोल को अचीव नहीं करता है. बट व्हेन यू आर टेकिंग ए डिसीजन इन कंसिडरेशन विद अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, विद द डीप नॉलेज, with the wants and needs of each and every member of the family, then only your decision will be good and you can achieve your goal in a better way. ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग जब आप लेते हैं आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज की, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए उस प्रॉब्लम की, आपको हर एक की नीड्स एंड वांट्स माइंड पता होनी चाहिए, देन यू टेक द डिसीजन इन अ बेटर वे. ठीक है, नाउ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कैसे आप मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग लेते हैं. फर्स्ट इज द डिफाइन द प्रॉब्लम, analyzing the problem, developing alternate solutions, selecting the best type of alternative, implementation of the decision, follow up, monitoring and feedback. सो पहले आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका एक एम है कि मैं अपनी विसिनिटी में प्रॉब्लम एनालाइज करूं, इसमें कौन सी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है जिसको मैं सॉल्व करना चाहती हूँ. एज ए न्यूट्रिशनिस्ट दिस इज माई एम. सो मैं अपनी विसिनिटी में जाती हूँ, वहां पे मैं पहले सर्वे करती हूँ और प्रॉब्लम को देखती हूँ. ठीक है, जब मैं डोर टू डोर सर्वे करती हूँ, मैंने सबसे इंफॉर्मेशन ली कि कौन कौन से वो हेल्थ कॉम्प्लिकेशन है जो न्यूट्रिशन रिलेटेड है, वो मैं देखती हूँ. ठीक है, आफ्टर दिस मैं बैठती हूँ एक जगह, मैं देखती हूँ मेन प्रॉब्लम कौन सी है जो ये फेस करते हैं. ठीक है, सो देन आई एनालाइज द प्रॉब्लम विच इज मोर प्रेवेलेंट इन माई विसिनिटी. ठीक है, देन यू टेक द प्रॉब्लम एज अ टास्क. So then I take one problem which is more prevalent in the vicinity and I take that problem as a task. ठीक है, after this I develop alternative solutions, how I can solve this nutritional problem या how I overcome this nutritional problem from my vicinity. ठीक है, सो मैं देखती हूँ अगर ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम मेरे एरिया में है, अब मैंने पहले देखा कौन कौन सी है, सो जो उसमें ज्यादा प्रेवेलेंट है उसको मैंने लिया. ठीक है, आफ्टर दिस आप देखते हैं कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, कैसे मैं अपने एरिया को, अपने विसिनिटी के लोगों को इससे बाहर निकाल सकूं. ठीक है, सो मैं बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस पहले अपने पास देखती हूँ.
फिर उन ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस में मैं चूज करती हूँ विच सोल्यूशन इज द बेस्ट and possible for me to implement that solution on the vicinity people so that I can overcome that nutritional problem from that area. ठीक है, बिकॉज जब मेरे पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस है, उन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस में पहले मैं सिलेक्ट करती हूँ बेस्ट वन, उसको मैं अप्लाई करती हूँ इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम फ्रॉम द विसिनिटी. ठीक है, सो मैंने देखा फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 सॉल्यूशंस देखे. इन 5 solutions, among the 5 solutions I can take the best solution. ठीक है, then I implement that best solution on the area. ठीक है, आफ्टर दिस मैं फॉलो अप करती हूँ, मे बी फॉर वीक, फॉर मंथ, फॉर 2 months. मैं देखती हूँ कि ये इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं, क्या ये इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि नहीं. मॉनिटर करती हूँ, मैं 1 हफ्ते के बाद जाती हूँ, लोगों से फिर से मिल जाती हूँ, उनसे फिर से इंफॉर्मेशन गेन करती हूँ, क्या उनमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन, क्या उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट है, उनकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम थी क्या उसमें उनको कुछ फर्क लग रही है कि नहीं. सो ये सब मुझे इंफॉर्मेशन थ्रू मॉनिटरिंग पता चलती है. देन फीडबैक, जब आपको लगता है कि पेशेंट जो आपके विसिनिटी के एरिया के जो मेंबर्स थे दे रिकवर फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, then you get feedback from them in order to evaluate your decision and know that whether your decision is going in a good way or in a wrong way. ठीक है, सो जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, ये आपके स्टेप्स है, फिर आप फाइनली इवेलुएट करते हैं इन ऑर्डर टू नो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में होते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, फिर आप एग्जाम देते हैं. एग्जाम का मेन फाइंड क्या है? टू गेट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स वेदर दे अंडरस्टूड द लेक्चर और नॉट. ठीक है, इन द सेम वे दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू अप्लाई इन ऑर्डर टू टेक द डिसीजन in a good way. ठीक है, now characteristics of the decision making क्या है? I hope you understood the what is decision making and what are the process of decision making. Now the last is the characteristics of decision making. It is a process of making a choice from alternative courses of action, isn't? बिकॉज जब डिसीजन हम लेते हैं आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस होते हैं, सो इसमें से आप एक डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं, वो डिसीजन होता है. द चॉइस इम्प्लाइज फ्रीडम टू बी चूजन फ्रॉम एमंग ऑल्टरनेटिव्स. बिकॉज आपके पास हम चॉइस देते हैं, आपको आज़ादी होती है कि इसमें से आप एक सोल्यूशन को चूज करते हैं, दैट इज डिसीजन मेकिंग. Choosing from alternative implies uncertainty about the final results of each possible course of action, isn't? Because उसी से आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, जो भी आपने पॉसिबल सॉल्यूशंस रखे थे उसमें से जब आप एक चूज करते हैं वो आप बेस्ट चूज करते हैं एज पर द इंफॉर्मेशन, एज पर योर नीड, एज पर योर रिसोर्सेज. It involves all the actions that must take place before a final choice can be made. It is basically a human process and a kind of intellectual activity because decision making में आपकी intellectual activity involve हो जाती है. Your mind is involved as it is a mental process. It is not a physical process. Decision making में आपका mind involve हो जाता है. So कैसा आपका mind काम कर रहा है, कैसे वो decide कर लेगा कि कौन सा solution best होगा, वैसा ही quality of decision making आपका होगा. ठीक है, it is focal point at which plan, policies and objectives translated into concrete choice. है ना, बिकॉज डिसीजन मेकिंग जो है, जो आप प्लान करते हैं कि मुझे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सोल्यूशन देखते हैं, फीडबैक लेते हैं. ठीक है, आप ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, अपने स्टेप्स को फ्रेम करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द गोल. बिकॉज ये सारा डिसीजन है, आप डिसाइड करते हैं कि ये मेरा गोल है, मेरा ये अचीव गोल है, इस गोल को अचीव के लिए आप प्लान बनाते हैं, क्या कैसे मैं इस तक पहुंच जाऊं, आप स्टेप्स फ्रेम करते हैं, उन स्टेप्स को आप फिर फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल. सो ऑल दीज स्टेप्स इज अ डिसीजन मेकिंग. It aims at bringing about a resolution of conflicts. It may be negative and may just be a decision not is decided. It is always purposive as decision is made to facilitate the attainment of some well-defined objectives.
It involves a time dimension and a time lag. Because डिसीजन मेकिंग में अगर आप पहले ही डिसाइड टाइम नहीं रखेंगे, सो आप इसको फॉर ग्रांटेड उस एक्टिविटी को लेंगे. सो जो फिक्स टाइम होता है, आपको पता होता है कि मेरे पास इतना ही टाइम है, सो विद इन दिस गिवन पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू अचीव दिस गोल. So time dimension or time lag is very important in decision making. Otherwise your decision will go in a रॉन्ग वे. बिकॉज जब आप डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कुछ एक्टिविटी करने के लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए, उसमें आप टाइम बॉन्ड रखते हैं. सो विद इन दैट टाइम बॉन्ड यू अचीव दैट गोल and you get success. So this is the decision making. So decision making, finally, you know that it is very important process in the management. We can say it is the heart of management. Without decision making you are not able to achieve your goal, because it needs a lot of energy, wide knowledge. ठीक है, then only you can take the decision in a good way. And the quality of decision finally depends on the quality of the management. So quality of management depends on the quality of decision making. आप कैसा डिसीजन लेंगे वैसा ही आपका मैनेजमेंट हो जाएगा. ठीक है, मैनेजमेंट आपका वैसा ही होगा अपने इधर सेक्टर का या अपनी फैमिली का. ठीक है, when you are taking the decision making, you should have wide knowledge of the information of the problem, alternative solutions you should know, knowledge of availability of resources, needs and wants of every member of the family. Then only you can take decision, good decision. ठीक है, so without decision making you are not achieving your goal in a good way. So when you are taking decision making, your mind should be free from all sorts of problems like anxiety, stress. Your mind should be stressful, it should be free from stressful. Then only you can take good decision. So this was the first function of the management. So thank you so much for today's lecture.